All right. Cool. Then we will talk about the targets at the end of the class also. I would want to see कि किस किसका क्या क्या कितना कितना हुआ है. But before that, let us dive into para summaries today. So today is an amazing like as a milestone class because we're starting VA, right? तो VA is मतलब RCs हमारा हो चुका है. RCs में we learned all the different tools that come handy to learn to read RCs to this हमने क्या क्या सीखा है सेंटेंस लैडरिंग सीखी है हमने सबसे पहले मॉडिफायर सीखे सेंटेंस लैडरिंग सीखी हमने फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट डिड we learn the tone we learn the purpose we learn the path framework right for forming the claim sentence then we learn the castle framework of option elimination right तो ये सारी चीजों के बाद now we are starting VA and RC to VA का jump बहुत ज्यादा smoothly होता है through para summaries because para summaries at the end what it's like finding a claim sentence for an RC right instead of an entire passage 500 words का यहाँ पे 200ish words 100 150 200 words का एक छोटा पैराग्राफ होगा instead of the entire passage and उसका भी हमें claim sentence ही ढूंढना है claim sentence as in what is the final thing like what is that one thing the author is trying to say here right cool so before we move into VA I want to tell कि VA सीखने से पहले हम कुछ tools of content creation सीखते हैं why do we learn the tools of content creation because at the end these articles that are written जहाँ से ये excerpts लिए जाते हैं passages RCs VA questions लिए जाते हैं those are written by writers editors right academicians भी तो whoever the academician is ठीक है will end up writing these things है ना तो उनका सीन क्या होता है कि वो लोग if they're good at writing they write all by themselves but usually if any person writes a book writes an editorial etc और वो writers नहीं है for that matter so obviously some editor takes it up and clubs all those thoughts in like a nice fancy language right which is actually a pain point in VRC तो whenever that happens है ना हमको ऐसा लगता है कि पेन उठाया लिख लिया टाइपराइटर या whatever ऐसा नहीं होता there's a way in which a novel is written there's a way in which some article is written political articles अलग तरीके से scientific articles अलग तरीके से there's a way in which it is written ठीक है तो जो लोग कंटेंट राइटिंग सीखते हैं दे फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है ना हम वो रूल्स क्यों सीखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू गेस कंटेंट राइटर बट द रीजन व्हाई वी लर्न दिस टूल्स इज सो दैट वी आर एबल टू डिकोड एंड प्रिडिक्ट व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू डू नेक्स्ट हमने काफी हद तक इस चीज का आरसी में भी किया जहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि देखो कैसे देयर इज अ लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लेम सेंटेंस अगर ऑथर ने एक क्लेम कोर क्लेम दे दिया है तो उसके बाद जस्टिफिकेशन ब्लॉक्स आते हैं राइट कैसे ऑथर अगर क्रिटिक्स एंड सपोर्टर्स बताता है तो हाउ डज दैट हैपन राइट मेनी अ टाइम्स वी ऑब्जर्व पैटर्न्स राइट कि किस तरीके से ऑथर आगे बात करता है अगर ऑथर कोई डिबेट इंट्रोड्यूस करता है तो उसके प्रोज उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव दोनों एक पैराग्राफ पॉजिटिव का एक पैराग्राफ नेगेटिव का वी लर्न कि डिफरेंट पर्पस ऑफ द पैसेज के हिसाब से कैसे अलग अलग तरीके से आरसीज ब्रोकन डाउन होते हैं तो ये क्यों होता है व्हाई डू दिस पैटर्न्स एक्सिस्ट इंग्लिश और लिटरेचर तो काफी रिलेटिव सब्जेक्ट है तो ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज आर ऑल रिटन बाय कंटेंट राइटर्स हु टेंड टू फॉलो सर्टेन मोल्ड और सर्टेन स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ डूइंग एन आरसी or writing any article. ठीक है तो same kind of things also come very handy in VA because in VA you're asked to construct a paragraph. How 4 sentences दिए हैं तुम्हें इससे एक पैरा जंगल राइट तो यू हैव टू मेक अ पैराग्राफ आउट ऑफ इट और देयर इज अ fill up para completion कि there is a paragraph given and there are blanks and you have to put that one sentence in one of the blanks कि कहाँ से paragraph sensible बनेगा odd one out again कि all of them belong to one paragraph the other one doesn't so all of these are what all of these are either at the end of it you're constructing a paragraph is at the end content writing so the moment you learn these tools it becomes extremely easy for you to crack these questions right तो जब हम पैरा समरी पैरा जंबल ऑड वन आउट और पैरा कंप्लीशन सीखेंगे इन ऑल दोस थ्री वी आर गोइंग टू लर्न दीज कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स हम सारे के सारे कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स उसमें सीखने वाले हैं पैरा समरी नॉट सो मच बिकॉज पैरा समरी में डू वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ नो right do we need to construct a paragraph no we just need to interpret a paragraph and write what is the summary line for it which is very close to as I told you finding the claim sentence of an RC ठीक है तो पैरा समरी के रूल्स क्या है बेसिक रूल्स ठीक है इसे यहाँ मैं लिख देती हूँ it's very close to it's not exactly the same but it is very close to not exactly very close to finding claim sentence of a para very close to finding a claim sentence of a para कि what is author trying to do or what is author trying to say here right तो अभी ना यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं टू फॉलो ठीक है पैरा समरी के ये 3 चीजें होती है कि you have to find the purpose, tone and central claim. Exactly 3 things that we do for RCs also. जो तुम पैराग्राफ का सेंट्रल क्लेम आएगा और तुम्हारे समरी का सेंट्रल क्लेम आएगा वो सेम होता है
जिस टोन में और जिस पर्पस के साथ ऑथर ने वो पैराग्राफ लिखा है, वो सेम पर्पस और टोन के साथ समरी भी लिखी जाती है. समरी इज समथिंग लाइक, इमेजिन कि you had 200 words to write some your thoughts. You wrote it in some way, and if now it is told to you, no, write it in 50 words only. So you'll write the same thoughts, right? But what you will do, तुम कुछ examples निकाल दोगे उसमें से, कुछ explanation निकाल दोगे उसमें से, कुछ justification निकाल दोगे उसमें से, right? Main बात तुम still कहोगे. And then if I tell you कि नहीं, say the same thing in 20 words, so then again you will strip it off. Correct? Correct. So whole point is, let's say very easy. Let's say types of animals you find basis their food preferences. So there are herbivores, carnivores and omnivores animals, right? तो तुमको ये पैराग्राफ लिखना है और मैंने 200 वर्ड्स में लिखने बोला, तो तुम कैसे बोलोगे? यू विल राइट एनिमल किंगडम ब्ला ब्ला ब्ला, दो तीन सेंटेंसेस, एंड देन देयर आर बेसिस देयर फूड प्रेफरेंसेस, देयर आर थ्री टाइप्स. ठीक है, देन हर्बीवोर्स का डेफिनेशन दोगे तुम, फिर उसके बाद में एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दोगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, फिर सेकंड सेंटेंस में उसको इजी लैंग्वेज में, रेगुलर लेमैन्स लैंग्वेज में लिखोगे. देन यू विल गिव एग्जाम्पल्स, है ना, तुम 10 एनिमल्स का नाम दोगे, और फिर शायद ये भी तुम लिखोगे कि कौन सा एनिमल क्या खाता है. जिराफ ऊंचे पेड़ खाता है, कौन सा एनिमल श्रब्स खाता है, कौन पत्ती खाता है, कौन घास खाता है, एक्सेट्रा. एंड देन यू गो टू ओमनिवोर्स एंड अगेन विल रिपीट, राइट? बट लेट्स से आई टेल यू कि ओ देयर आर जस्ट 200 वर्ड्स, सो प्रॉब्ली 10 एनिमल्स की जगह पे यू विल जस्ट टेल अबाउट 2. ठीक है, प्रॉब्ली यू वोंट एंड अप डिस्क्राइबिंग सो मच कि पेड़ पर सब बस बोलोगे कि एवरीबडी ईट्स प्लांट्स. You won't end up saying कि कौन श्रब खाता है, कौन ऊंचे पेड़ खाता है. You won't like probably describe that. And if I tell you have just 50 words to write it, so you will directly start कि there are three types of animals basis their food preferences. Herbivores are the ones who eat greens, omnivores are the ones who eat carnivores are the ones who eat flesh, and omnivores are the ones who eat either of the two. ठीक है, example would be this and this. एक एक नाम या दो नाम दे दोगे, 50 words में finish. So at the end you're saying the same thing, but you're stripping it off of extra justification, examples or explanation. Fair. तो वही होता है समरी. It's not that you change the topic. It's not that you change the main point that is being said. You don't change the central theme. You don't change the tone or the purpose. तुम same ही कर रहे हो. The purpose of all three passages I told you was to explain you the three types of animals, right? तो तीनों का भी वही purpose है. The words that you chose to describe it, वो हो गए हैं कम. तो ये हमें ध्यान में रखना है. Many a times what happens is people end up thinking कि paragraph का interpretation is a summary. Interpretation का क्या मतलब होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब व्हाट यू अंडरस्टूड आउट ऑफ इट. इंटरप्रिटेशन इज कि जो पैराग्राफ है वो पढ़ के तुम्हें क्या समझा, जो पैराग्राफ है वो पढ़ के तुम्हें क्या समझा. बट दैट इज नॉट समरी. समरी इज द पैराग्राफ एग्जैक्टली द सेम इन लेसर वर्ड्स. ठीक है, तो समरी का इंटरप्रिटेशन, समरी से तुम्हें वही चीज समझेगी जो तुम्हें पैराग्राफ से समझी है. सो समरी इटसेल्फ इज नॉट इंटरप्रिटेशन. पॉइंट इज पैराग्राफ एज वेल एज समरी का इंटरप्रिटेशन इज द सेम. तुम्हें पैराग्राफ और समरी पढ़ के सेम चीजें समझेंगी. पैराग्राफ में ज्यादा वर्ड से, समरी में कम वर्ड से, पर समझेगी तुम्हें सेम चीजें. ठीक है, तो समरी इटसेल्फ इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन, बट समरीज इंटरप्रिटेशन एंड पैराग्राफ इंटरप्रिटेशन इज सेम. डू वी अंडरस्टैंड दिस क्लासिक डिफरेंस? बिकॉज यहाँ पे लोग काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं. गिव मी ऑल ऑफ यू ऑल, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर. यस, गुड. तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे बिकॉज दिस इज द बेसिक ट्रैप दैट स्टूडेंट्स एंड अप फेसिंग इन पैरासमरीज. ठीक है, उसके बाद व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज, so tone, purpose, and your central claim is going to remain same. The interpretation, the main point of paragraph and a parasummary and the summary is going to remain the same. And जब तुम paragraph को summary में convert करते हो, तो some things you keep in mind, like you have to note the keywords. Keywords मतलब जो हमने अभी types of animals का paragraph देखा, उसमें keywords क्या थे? वो herbivorous and omnivorous, carnivorous animals. ये keywords थे, right? And उनके definitions keywords थे. So no matter how short we make them, no matter how short we make that paragraph, we retain those keywords. We never get rid of the keywords. So you have to always note the keywords. They are part of the summary as well. Secondly, there are common qualifiers. Qualifiers are very similar to they say may, often, suggest, partly. All of these things जो author कहता है, author qualifies your argument. Whatever author is giving as an argument in the paragraph, वो author ये words use करता है. May, it often happens, है ना, पार्टली और सजेस्ट एक्सेट्रा. तो ये सब कॉमन क्वालिफायर्स होते हैं जो समरी का भी पार्ट होता है. यूजुअल स्ट्रक्चर्स आर द सेम स्ट्रक्चर्स दैट वी सॉ फॉर आरसीज. ठीक है, कि बेनिफिट एंड लिमिटेशन, फेनोमेना एंड एक्सप्लेनेशन, है ना. दिस इज व्हाट टू इन्फॉर्म और एक्सप्लेन वाला पर्पस है, राइट. बेनिफिट एंड लिमिटेशन इज टू एनालाइज वाला पर्पस है, राइट. ओल्ड व्यू न्यू व्यू इज व्हाट पर्पस इज दिस? डिबंकिंग, टू चैलेंज और टू क्वेश्चन, राइट. ठीक है. क्लेम एंड रीजन इज बेसिकली जहां पे ऑथर कीप्स ऑन जस्टिफाइंग, तो इसमें टू परसुएड यूजुअली होता है.
यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? हमने ये सारे टाइप के आरसीस देखे हैं, वो सेम काइंड ऑफ पैराग्राफ आएंगे, सेम काइंड की समरी आएगी। कॉमन एरर्स, अच्छा बाय द वे ये जो सारा मैंने लिखा है, दिस इज आफ्टर एनालाइजिंग ऑल पीवाईक्यू सिंस 2017। हाँ, these are the common errors that are found, ठीक है? और obviously I used AI to find ki what are the common errors, and the fun part is that look at each of these errors and you will realize it is exactly what we learned in Castle framework. जो पिछला क्लास था जिसमें मैंने तुम्हें Castle framework सिखाया था ऑप्शन एलिमिनेशन का, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि these are the kind of errors that I have personally observed exist, and when I asked AI to analyze it, same, right? That's why when I taught you Castle framework, मैं इतने short थी, I was very sure कि इसके beyond अगर तुम इसको मास्टर कर लोगे तो कोई ट्रैप नहीं है आरसी के क्वेश्चंस का। जब तुम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, कोई ट्रैप नहीं है विच विल लिमिट यू, कोई ऐसा ट्रैप नहीं है, राइट? सो देयर इज अ रीजन कि रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन से वो कैसल फ्रेमवर्क मैंने खुद से बनाया है, राइट? एंड देन इफ यू लोकेटेड द सेम काइंड एरर्स, देखो टोन चेंज एरर, इट्स अ पार्ट ऑफ कैसल। ओवरस्टेट मतलब, ओवरस्टेट का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम, राइट? उसके बाद scope change, narrow scope or broad scope. Scope change also was a part of our Castle framework. Then miss one side of the tension matlab, it's basically a change causal logical relationship. All of these means cause and effect error, right? तो हमारे Castle का full form क्या था? stands for cause and effect. A is alternate information. S is scope change. T is tone change. L is lateral info, and E was extreme. So all of these things are told here exactly as it is. So Castle itself is enough for us to understand what kind of errors can exist. Same errors exist in parasummary also. Parasummary is that question in RCs also, where it says which of the following captures the essence of the passage, right? What can be inferred? What is the author's central claim in this passage? All of those questions and parasummary questions are potato, same only. Okay? And usual correct options are the ones जहाँ पे best proportional coverage, closest author intent, and best abstraction level. And this is really important to know. Very, very important. Parasummary की जो options होते हैं ना, correct option, मैं बताती हूँ. Correct option is not the one, not the best summary. It is closest to the best summary. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट समरी। यार तुम पैराग्राफ पढ़ोगे और मैं तुम्हें बोलूंगी कि इसको समराइज करो ना, तो तुम समराइज करोगे, तुम्हें दिखेगा यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। यू विल नेवर फाइंड इट इन ऑप्शन। एग्जैक्ट समरी यू विल नॉट फाइंड इन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस यू विल फाइंड ऐसा समरी विच इज क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट समरी, ठीक है? एंड दैट इज वेयर दे क्रिएट a challenge for you. They don't give you exact summary ever. They give you four options that are closest, that seem like they are close, because कोई भी एक absolute answer निकलेगा ही नहीं। तो मिलेगा यार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। So you have to find the one which is closest. How do you find the closest? जिसमें breast proportional coverage है, मतलब most of the information, ना all भी नहीं है, but सबसे सबसे ज्यादा information cover करी है, क्लोजेस्ट टू ऑथर्स इंटेंट है ना, ऑलमोस्ट वही बात करी है जो ऑथर ने कही है, और इनमें से कोई भी एरर एग्जिस्टिंग उसमें नहीं है। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड समरी, ठीक है? तो इनफ ऑफ थ्योरी पार्ट, ठीक है? ये काफी ज्यादा वी आर गोइंग टू फॉलो एवरीथिंग दैट वी लर्नड इन आरसीज while solving parasummary. So right now we will directly jump to doing questions, and the method of solving is going to be the same. First you will eliminate extra information modifiers, you will eliminate that, you will note the keywords, you will note purpose and tone of the author, and then find out of options which one works the best for you. ठीक है? I have taken, as usual, we learn VRC through PYQs. So I've strategically taken a few PYQs for you that overall capture different types of traps or different types of parasummaries that come. ठीक है? तो अलग अलग टाइप्स मैंने कर लिए हैं। ये हम 10 क्वेश्चन करेंगे, और ये 10 क्वेश्चन से जो भी सारे PYQ, जो भी सारे parasummaries that were ever asked, सारे सारे कवर हो जाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स विल गेट प्रैक्टिस शीट्स जहां पे वी विल पुट ऑल ऑफ दिस टू प्रैक्टिस। फेयर? चलो लेट्स डू इट। I hope you can read this. ठीक है? So eliminate modifiers and accordingly choose correct options and tell me which one you think is right. I'll give you 2 minutes to do it. As usual, turn on your private chats and answer me on private chats, okay? No answers in the public chat.
Very good. Very good. Good. Proud of you. All right. चलो let's do this one together. करे साथ में करे, पहला पहला है, साथ में करते हैं, ठीक है? Let us do this together. यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला है to me, मतलब author is telling their own opinion. Classic means precisely opposite to what my predecessors understood. So precisely opposite to what my predecessors understood. Colon दिया है. A work classical by reason of its resistance to contemporary and supposed universality. मतलब a work is classical by reason of its resistance to contemporaneity. मतलब contemporary क्या होता है? मैंने क्लास में पहले भी समझा. Contemporary मतलब which is present, current, right? आजकल चलता जो चल रहा है वो contemporary हो गया. ठीक है? तो resistance to contemporary and supposed universality by reason of its capacity to indicate human peculiarity and difference in the past epoch. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि classic means opposite to what my predecessors thought. So what predecessors understood is a universal thought, right? And you are debunking it, right? ऑथर क्या कर रहा है? ऑथर बोल रहा है कि जो लोग यूजुअली समझते हैं उसके ऑपोजिट में समझता हूँ. जो लोग यूजुअली समझते हैं उसके ऑपोजिट में समझता हूँ. So this is a classic example of a passage which is challenging or questioning a universally accepted thought. राइट? जो कॉमनली नोन है, जो लोग कॉमनली मानते हैं, उसको ऑथर चैलेंज कर रहा है. और ऑथर बोल रहा है ना? राइट? what is the purpose here? The purpose definitely is author redefining something, right? Old thought versus new thought. यही है ना? Old thought versus new thought. So basically this first sentence itself tells कि this is author challenging some old thought and replacing it with new one, right? तो हमको ये पहला सेंटेंस देख के ये क्लिक होना चाहिए था कि दिस इज ओल्ड थॉट वर्सेस न्यू थॉट वाला पैराग्राफ. फिर हो गया था ये. डिड यू रियलाइज इट? डिड यू रियलाइज इट? yes, very good. Others okay, good. Amrita, Nitya, Vidikal, yes, yeah, good. So ये पहले हमें रियलाइज हो जाना चाहिए कि यार तुरंत ये मतलब पर्पस हमारे दिमाग में होना चाहिए. फाइव पर्पसेस ऑलवेज शुड बी द टॉप ऑफ आवर माइंड. ठीक है? तो यहाँ पे रियलाइज हो गया कि भाई ये तो चैलेंजिंग वाला आर्स है, वहां पे जहाँ पे ओल्ड थॉट को न्यू थॉट से रिप्लेस करा गया. तो ये पहली बात है. अब ऑथर इज लाइक अ वर्क क्लासिकल बाय रीजन ऑफ अ वर्क इज क्लासिकल बाय रीजन ऑफ. एक वर्क क्लासिकल कब होता है? रेजिस्टेंस टू कंटेम्परेरिटी एंड सपोज यूनिवर्सलिटी. मतलब किसी भी चीज को क्लासिक कब हम कंसिडर करते हैं? जब कंटेम्परेरी जो चल रहा है, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है, उसको तुम रेजिस्ट कर दो. व्हेन यू रेजिस्ट समथिंग विच इज ऑन गोइंग. ठीक है? अ वर्क इज क्लासिकल if you resist something, if that work resists something that is going on currently. By reason, another reason दे दिया. तो एक पहला रीजन अभी क्या, ये लिस्ट ऑफ थिंग्स है. लिस्ट ऑफ थिंग्स है ना? बाय रीजन अ वर्क इज क्लासिकल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट. कितने रीजन देता है देखते हैं. बट फर्स्ट रीजन इज कि जब करंट जो चल रहा है उसको तुम रेजिस्ट करो. बाय रीजन ऑफ इट्स कैपेसिटी टू इंडिकेट ह्यूमन particularity and difference in the past epoch. मतलब जो पिछले जमाने में the reason of its capacity to indicate human, मतलब in human, how humans are particular by nature. ठीक है? how like peculiarity of human beings, उसको तुम इंडिकेट करते हो एंड उसके डिफरेंसेस बताते हो दैन द पास्ट. जो पहले चल रहा था वर्सेस जो अभी चल रहा है. ठीक है? उसकी जब तुम डिफरेंसेस दिखाते हो ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसको भी मैं क्लासिक बोलता हूँ. ठीक है? अभी व्हाट इज क्लासिक नॉट? अ क्लासिक इज नॉट व्हाट टेल्स me about shared humanity, और ये तो मॉडिफायर है, और what lets me recognize myself as already present in the past, what nourishes in me the illusion that everything has been like me and has existed only to prepare the way for me. तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे थे? द क्लासिक इज नॉट दिस, राइट? तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है when we learn sentence laddering that what is not is never important, what it is important, right? तो ऑथर अभी क्लासिक मेरे लिए ये है और क्या नहीं है वो बता रहा है. तो क्या नहीं है ये सुन के हमें फायदा मिलने वाला है क्या? नहीं. whatever it is not is always less important than whatever it is. So all of this is a modifier. Sentence laddering में हम इसको lesser importance देंगे. ठीक है? Because what classic is not doesn't matter. तो जब मैं summary लिखूंगी तो passage at the end is about me redefining, me as if I was an author. The passage at the end is about me redefining what classic means and telling my opinion about it. What I think classic is not doesn't matter, but what I think a classic is, that matters more. So summary का ये part नहीं होगा कि classic is not what tells me about shared humanity or what lets me recognize myself as already present in the past. What nourishes in me the illusion that everything has been like me and has existed only to prepare the way for me.
क्लासिक ऐसी चीज नहीं है जो मुझे शेयर्ड ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है, या बताती है कि जैसा मैं हूँ, लाइक एवरीथिंग इज टुगेदर टू प्रिपेयर द वे, मतलब एवरीथिंग इज एग्जिस्टेड सो दैट आई बिकम द वे आई एम, ठीक है, और इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, ठीक है, दैट एवरीथिंग हैज बीन लाइक मी। तो वो मेरे लिए क्लासिक नहीं है। उसने स्टार्टिंग में क्या बोला, क्लासिक फॉर मी समथिंग दैट चैलेंजेस व्हाट इज यूनिवर्सैलिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जो रिकन्फर्म करता है कि शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, एवरीथिंग अराउंड मी एग्जिस्ट फॉर मी टू बी द वे आई एम एक्सेट्रा, वो मुझे क्लासिक नहीं लगता। तो ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे। सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दिस। दिस इज नॉट हमारे काम की चीज एट ऑल, ऐसे नहीं करती हूँ। वॉट क्लासिक इज नॉट, वॉट इज नॉट इज ऑलवेज लेस इंपॉर्टेंट वॉट इज, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। इंस्टेड द क्लासिक इज व्हाट गिव्स, अगेन ना दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लासिक ये नहीं है, बट क्लासिक क्या है, वो मेरे काम का है। द क्लासिक इज व्हाट गिव्स एक्सेस टू रैडिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस for any given generation of readers, and thereby expands for them the range of possibilities of what means to be a human being. Again, another definition की classic क्या है, classic is something that gives access to different form of human beings, ठीक है, एंड रीडर्स, क्लासिक नॉवेल की बात कर रहे हैं वो, ऑब्वियसली तो क्लासिक लिटरेचर की बात कर रहे हैं, एंड इट एक्सपांड्स द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ओरिजिनली इट वाज थॉट कि क्लासिक प्रेडिसेसर्स, पहले के लोग सोचते थे क्लासिक इज समथिंग दैट रीअफर्म्स की दुनिया ऐसी चलती है तो क्यों चलती है, राइट, उसको क्लासिक समझा जाता था। बट मेरे लिए इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। आई थिंक क्लासिक इज समथिंग विच चैलेंजेस व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, विच गिव्स मी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, शोज मी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉन्साइंस की यार क्या क्या चीजें हो सकता है, ठीक है, एंड गिव्स मी लाइक मेरे दिमाग को, एक रीडर के दिमाग को, और उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है बाय चैलेंजिंग व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, टेलिंग न्यू थिंग्स, समथिंग दैट रीअफर्म्स की दुनिया कैसे चलती है इज नॉट अ क्लासिक फॉर मी, ठीक है। दैट इज व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से इन लेमैन्स टर्म्स। सो इफ यू लुक एट ऑप्शंस हियर, ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन वगैरह छोड़ो, एनालाइज कैसे किया पैसेज को, हमारी सारी चीजें काम में है यहाँ पे, ठीक है। थ्रू सेंटेंस लैडरिंग वी हैव लर्न कि व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो वो नॉट वाला हमने एलिमिनेट कर दिया। सेकेंडली वी रियलाइज दैट इट इज अ चैलेंजिंग, कि जहाँ पे ऑथर इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू डेफिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट न्यू डेफिनेशन, वो पैरासमरी के सॉरी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में और पैराग्राफ के एंड में दिया हुआ है, विच चैलेंजेस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, विच एक्सपांड्स योर कॉन्शियसनेस की क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, तुम पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सको। तो दैट इज व्हाट classical work or a classic is, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इवेल्युएट द ऑप्शंस एंड टेल मी व्हिच वन विल बी राइट। जिन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया, ठीक है, अटेम्प्ट, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। So when we look at the options, what do we learn? The first option is a classic is able to focus on contemporary human conditions and unified experience. This is exactly opposite of the opposite of what para is saying, right? Author ने बोला classic is not this. It is not contemporary. It is not shared experience. It is not both of these things. So this is an obviously wrong option. Obviously wrong option है जहाँ पे exactly opposite of चीज कही गई है, ठीक है। Secondly, a classical work seeks to resist particularity and temporal differences even as it focuses on common humanity. ये भी opposite, एक तो cause and effect error है इसमें, ऊपर से again it focuses on and it seeks to resist this even as it focuses on this. The author तो बोल रहा है कि it doesn't focus on common humanity in the first place. So this is also not true. C or D में a classic is a work exploring the new, going beyond the universal, the contemporary, and the notion of unified human consciousness. The classic is going beyond all of these things. यही बोला ना author ने. Classic work is about exploring new things and going beyond what is universal, what is existing, and what is a unified human. Like सब लोग जो सोचते हैं उसके beyond जो चीज जाती है वो classic होता है. Author ने बोला है ना ये चीज. C we will part. D, a classic is a work that provides access to universal experience of human race as opposed to radically different forms of human consciousness. देखो, try to understand its sentence. क्या बोला है? The classic is a work that provides access to universal experience of human race. It gives you access to universal experience of human race. ठीक है, universal experience of human race. It must seem like words like universal are used, humanity is used, but universal experience of human race is a totally different thing. This is an alternate information. इसमें words, fancy language use करके वो words डाल दिए, which seem very close to what is written in the passage, but it is not. ठीक है, and a classic work it gives you access to this opposed to radically different forms of human consciousness. ये भी नहीं बोला, author in fact बोला कि it gives you access to different forms of human consciousness. So this is also wrong. So right answer is option C. इसने options are rather easy because exactly author ने जो बोला, if you understand what the author is trying to say, उसकी exact opposite चीजें यहाँ पे mark करी गई है.
एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज है, राइट? कि जो भी ऑथर ने बोला था कि क्लासिक इज नॉट वो चीजें इट इज, ऐसा बोला गया, राइट? सो ऑल ऑफ दिस दैट इज रॉन्ग. Doesn't the last sentence generally give the summary overall view of the passage? No, it doesn't. That's not a general rule. It depends on how the paragraph is constructed. Somebody's asking me, usually shouldn't we look at just the last sentence, because last sentence will end up giving para summary? Not for sure. What if the paragraph is such that it gives you central claim pehle and then next is just justification or the examples or the explanation of it? So ऐसा कोई thumb rule नहीं होता. Many a times you do end up finding a para summary is a combination of what is given at the start and what is given at the end. But that's like a jugaad method. That's not a conceptual method to solve it. But yes, जुगाड़ observation can be this कि starting में कुछ दिया है, end में कुछ दिया है, उन दोनों का combination है. Starting में जो दिया है, end में दिया, उसका combination बन के हमारी summary बन गई है. So that can be a quick insight. But right now we are learning concepts. Let us solve all of these 10 questions and see if that's a pattern that we observe. ठीक है? But ideally you're supposed to solve it this way. Okay, चलो next. Do this question. Try to really understand what passages are trying to say. Okay. चलो let's do this one. बहुत सारे fancy words also used. ठीक है? Very interestingly in a passage which talks about, we are going to fancy words के meanings भी समझने वाले हैं. And I was saying it is very interesting is because this passage is about how you can understand the meaning of words by understanding how they are used. है ना? Meaning in use. ये हमने first class of VRC में सीखा था, right? Right? Contextual vocabulary. We learned it, right? How to put the word in context and understand its meaning. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है in this passage? A fundamental property of language is that it's slippery, messy, and more liquid than solid. ठीक है? A gelatinous mass that changes shape to fit. Basically, it is very flexible. ये पूरा बोलने का कि language is very flexible. यही बोल रहा होता कि fundamental property of language is that it's very flexible. ठीक है? Somebody would remind us, usage has no sharp boundary. Same thing said again and again. It's very flexible. तो ये सारा चीज is a modifier. Your language is very flexible. Oftentimes, the only way to determine the meaning of the word is to examine how it is used. You understand meaning of a word by examining how it is used. It is called meaning in use doctrine. तो वो कैसे use किया है उससे हम उसका meaning ढूंढ रहे हैं. There are differences between meaning in use doctrine and dictionary first definition. ठीक है? तो dictionary first theory अलग होती है. मतलब dictionary first meaning will be अलग and meaning in use will be अलग. These two things are different. So अब तक हमें क्या पता चला? Language is flexible, है ना? कहीं मतलब there is no boundary in which it is used. तो कई बार हमें word का meaning पता चलता है in the way it is used, and that is very different than the dictionary meaning of it. That अभी बता दिया it is different. अब आगे explain करेंगे how it is different. So the dictionary is careful fixing words to definitions like butterfly spin to glass doesn't matter. Dictionary's careful fixing of words to definitions can suggest that this is how language works. Dictionary जैसे fixed meaning बताया है, तो fixed meaning से हमें लगता है कि language ऐसे ही काम करेगी. The definitions can seem to ensure and fix the meaning of words, just as gold standard can back a country's currency. है ना? मतलब gold के prices से country currency define जैसे होती है, वैसे ही definition से words का meaning define होता है. तो basically they have just tried to say the same thing again and again. ये again एक modifier ही है. ये भी again same modifier, the same thing repeated again. कि dictionary ये बोल दिया है ना यहाँ पे, तो वही बात है. मैं थोड़ा thicker pen use करूँ क्या? तो यहाँ बोल दिया है ना कि डिक्शनरी फिक्स करती है वर्ड की मीनिंग, वही बात है. और उस फिर सेम चीज फिर से बोलने की कोई बात नहीं थी कि इसका मतलब डेफिनेशन सीम टू एंश्योर कि हम मीनिंग्स फिक्स करते हैं जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी फिक्स करता है. समझ गया था बेसिकली कि डिक्शनरी में फिक्स मीनिंग बताया जाता है. व्हाट विंस्टन फाउंड इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज हाउएवर वाज दैट फ्री फ्लोटिंग करेंसी ऑफ द मीनिंग. फ्री फ्लोटिंग करेंसी मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड arises out of the exchange, मतलब arises out of how it is used. Exchange मतलब how it is used, how it is exchanged. The lexicographer is a person who writes मतलब edits, compiles a dictionary. उसको लेक्सिकोग्राफर बोलता है जो डिक्शनरी लिखता है. ठीक है? अब देखो ऑथर ने क्या बोला है, द डिक्शनरी राइटर abstracts a meaning from that exchange, which is then set with the convention of the dictionary definition.
देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये जो डिक्शनरी बनाने वाला इंसान वो देखता है कि वो वर्ड यूज कैसे किया जाता है और उसके यूसेज के हिसाब से देन डेफिनेशन चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन देख के हम वो वर्ड को यूज करते हैं, वो वर्ड एक सर्टेन तरीके से यूज किया जा रहा है and then उसको डिक्शनरी डेफिनेशन में लिखा जाता है। There are so many new words that keep on coming, right? Like for example, selfie. Selfie as a word came some 7-8 years back. Did it exist in the dictionary earlier? No. Selfie as a word started being used and then it became part of the dictionary. ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, जेनजी, जेन अल्फा, न्यू न्यू वर्ड्स आते रहते हैं, राइट? वी गेट टू नो अबाउट इट सो मेनी टाइम्स। रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट करते थे क्या पहले? नहीं। दीज वर्ड्स केम इन एंड देन इफ दे आर वेरी वाइडली यूज्ड देन दे आर आल्सो मेड अ पार्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी देख के हम वर्ड यूज करते हैं, वर्ड जो यूज करे गए हैं उनसे डिक्शनरी बनती है, ये ऑथर ने कहा गया। सो ओवरऑल व्हाट द पैसेज इज अबाउट, देखो तो ओवरऑल द पैसेज इज अबाउट की लैंग्वेज इज वेरी फ्लेक्सिबल। देयर आर टू मीनिंग्स, वन इज मीनिंग इन यूज, कि हाउ डू वी यूज अ वर्ड, and that can be very different than the dictionary meaning of it. Dictionary tends to fix a word meaning, right? But when we exchange it, it can take different meanings, right? So जो dictionary लिखने वाला है वो क्या करता है, वो देखता है how the word is used and accordingly definition change भी करता है dictionary में उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बताया गया। तो अभी basis that if we look at the options, how do we evaluate it? पहला बोलता है dictionary definitions are like gold standards, artificial, theoretical, dogmatic. What do you mean by dogmatic? Dogmatic means मैंने जो बोला वो सच है। Somebody who is very rigid of their opinions is dogmatic। ठीक है, कि मैं अगर कुछ सोचता हूं तो वो सही ही होगा, तो वो डॉगमेटिक होता है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, डिक्शनरी डेफिनेशंस आर लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड्स, आर्टिफिशियल, थ्योरेटिकल, डॉगमेटिक, नन ऑफ द वर्ड्स आर यूज्ड। पैराग्राफ में ऑथर ने जरूर बोला है कि वो फिक्स कर देता है मीनिंग, बट आर्टिफिशियल, डॉगमेटिक मतलब नेवर ओपन टू चेंज, ये भी नहीं है ना। यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि इट कैन चेंज ऑल्सो, लाइक यू नो लेक्सिकोग्राफर एब्स्ट्रैक्ट द मीनिंग फ्रॉम दैट एक्सचेंज एंड विच इज देन सेट विद इन द कन्वेंशन ऑफ डिक्शनरी डेफिनेशन, राइट? तो फिर ये, एंड सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम, जहाँ पे डॉगमेटिक वगैरह की मतलब वेरी रिजिड मीनिंग है, थेरेटिकल, आर्टिफिशियल, देयर आर दीज वर्ड्स ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन, हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, एक्स्ट्रा यूज्ड वर्ड्स है, दिस इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन। एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क, एक्चुअल मीनिंग भी नहीं बोला है, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि एक्चुअल मीनिंग होता है, उन्होंने बस बोला कि इट इज डिफरेंट, द मीनिंग इन यूज इज डिफरेंट देन द डिक्शनरी, कैन बी डिफरेंट देन द डिक्शनरी मीनिंग, doesn't mean कि it is an actual meaning of the word. So this is definitely a classic example of extreme, and that's why this is not the right option. Secondly, language is already slippery. Given this, accounting for meaning in use will only exasperate का मतलब क्या होता है, worsen the problem। ठीक है, दिस इज वाई लेक्सियोग्राफर्स फिक्स मीनिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, की लैंग्वेज ऑलरेडी स्लिपरी है, तो अगर तुम मीनिंग इन यूज देखोगे तो प्रॉब्लम खराब हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम पता नहीं, बट प्रॉब्लम और खराब हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज स्लिपरी है, तो कहाँ से कैसे यूज किया है अगर वो तुम देखोगे तो प्रॉब्लम खराब हो जाएगी, इसलिए फिक्स्ड मीनिंग की जरूरत होती है। दैट इज वाई डेफिनेशंस फिक्स किए जाते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट एरर है, ऐसा कुछ भी मतलब अगेन अनरिलेटेड। एंड टोन चेंज भी है कि ये दिस इज अ प्रॉब्लम, दैट इज वाई इट इज फिक्स्ड। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया नहीं है ऑथर ने, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताया ऑथर ने बस बोला है कि दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स और दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स, सो दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। देन सी सेज मीनिंग इज डायनेमिक, डेफिनेशंस आर स्टैटिक। ठीक है, कि मीनिंग चेंज होते रहता है, डेफिनेशन फिक्स्ड होता है। द मीनिंग इन यूज थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशंस ऑफ वर्ड्स आर कल्ड फ्रॉम देयर मीनिंग इन एक्सचेंज एंड यूज, नॉट वाइस वर्सा। यहाँ पे बोलो कि मीनिंग इन यूज थ्योरी से हमें पता चलता है कि डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स आर कल्ड फ्रॉम देयर मीनिंग इन एक्सचेंज, कि जिस तरीके से वो वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं वो एक्सचेंज के बेसिस पे डेफिनेशन डिसाइड किए जाते हैं, नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका थोड़ा थोड़ा हिंट है हमें लास्ट लाइन में, राइट? बट अगेन वी कैन ओनली पार्क दिस, वी कांट से दैट इट इज अ बेस्ट समरी। ठीक है, क्योंकि बेस्ट समरी वुड बी समथिंग दैट टॉक्स अबाउट हाउ मीनिंग इन यूज इज डिफरेंट देन मीनिंग इन डेफिनेशंस। ठीक है, सो व्हाट दिस लेक्सिकोग्राफर्स डू इज कि मीनिंग इन किसी भी वर्ड का एक्सचेंज में जो मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट करके डिक्शनरी डेफिनेशंस बनाया जाता है। यहाँ पे भी वही बात बोली है कि मीनिंग डायनामिक होती है, डेफिनेशन स्टैटिक होती है। तो मीनिंग इन यूज थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि डेफिनेशंस ऑफ अ वर्ड आर कल्ड, मतलब निकाले जाते हैं फ्रॉम द मीनिंग इन एक्सचेंज। कि एक्सचेंज मतलब वर्बेटम एक्सचेंज, कि एक्सचेंज में जो मीनिंग है वहां से उसको निकाला जाता है। ठीक है, और उसका यूज डिसाइड करता है, नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ऐसा नहीं कि डिक्शनरी से मीनिंग निकाल के उसको यूज करेंगे, यूज के हिसाब से डेफिनेशन डिसाइड करेंगे, ये यहाँ बोल रहा है। तो इसका हिंट है लास्ट लाइन में, इट्स समवेयर बट इट इज पार्शियल। तो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वन सेज। The meaning of the words in dictionary is clear, fixed, and less dangerous and ambiguous than the meaning that arises from the words are exchanged in the people. Less dangerous and ambiguous.
classic tone change, right? So these other are so bad that C ends up being the right answer. जो मैं काफी बार बोल रही थी कि it is never about having one like the best summary but the best of the given lot. So C should be right. ठीक है? Are you getting it? और are these examples too tough? मैंने पहले easy example से start करना चाहिए था, PYQs में देने चाहिए थे directly. बताओ, are you understanding it or finding it tough? Okay, okay. This is good. All right. Understanding. Okay. Cool then. समझ रहा है तो अच्छी बात है. And I want you to decode it all by yourself also. ठीक है? देखो guys, to be honest, बात वही है ना कि हमको वो वर्ड्स में नहीं घूम जाना है, हमको वो हर एक सेंटेंस में नहीं घूम जाना है. We don't have to entangle ourselves in all of these mess. आधी चीजें we've always found that 50% of the things is just not rubbish but just over explanation, over complication of things. So 50% of the RC, 50% of the passage is already eliminated. You focus on the points, the main points to be extracted. जैसे कि यहाँ पे पहले 2 लाइन 3 लाइन का मतलब क्या है, लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल. फिर उसके आगे का मतलब क्या है, 2 टाइप होते हैं, मीनिंग इन यूज एंड डिक्शनरी मीनिंग. ठीक है, दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया. मीनिंग इन यूज मतलब तुम बोलते हुए कैसे यूज करते हो, और डिक्शनरी मीनिंग मतलब जो डिक्शनरी में लिखा गया है. ठीक है, वो फिक्स्ड होता है, बोलने वाला फ्लेक्सिबल होता है. राइट, यही है बस. तो इस तरीके से आरसीस को डिकोड करना शुरू करो, rather than getting entangled in each and every word. ये इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, and keep it to the surface. surface पे यार artificial, theoretical, dogmatic ये सब तो नहीं बोला है, ये words है नहीं, तो हटा दिया. dangerous, ambiguous, dangerous वगैरह भी word है नहीं, हटा दिया. ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि फिक्स मीनिंग्स इसके कारण किए जाते हैं, ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं पे दिखाया नहीं है, एलिमिनेट कर दिया. तो ऐसा करके ना एनालाइज करना शुरू करो चीजें, rather than getting एकदम fixed on each and every word and like confusing yourself. ठीक है, at times that helps.